Very nice good morning to all of you. I am Roshan Kumar of Maths Teachers Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. Students, today I am going to discuss next chapter of mathematics of class 9, chapter number 8, triangles. Introduction of triangles in this video lecture. Okay, so my chapter is triangle, chapter 8 of class 9. What is triangles? Students, triangles is a polygon. Triangles is the first polygon, a simple cloid figure which is bounded by 3 line segments. A simple cloid figure. A simple cloid figure which is bounded by 3 line segments is called a triangle. Triangle is the first polygon. What is polygon? Polygon is a cloid figure which is bounded by 3 or more than 3 line segments, just such as triangles, quadrilaterals, pentagon, hexagon, that it is. So students, a triangle is a simple cloid figure which is bounded by 3 line segments. 3 लाइन सेगमेंट से बॉन्ड किया हुआ एक सिंपल क्लोइड फिगर है जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइंगल. ट्राई एंगल्स, ट्राई इट मीन्स 3 और एंगल्स का मतलब होता है एंगल. 3 एंगल्स बनते हैं इसमें, जैसे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. ओके, तो ए ट्राइंगल हैज 3 साइड्स. ए ट्राइंगल हैज 3 साइड्स. 3 sides, AB, BC and AC. Okay, 3 angles. Angle A, angle B and angle C. Okay, and 3 vertex. A, B and C. A point, vertex, 2 or more line segments meet at a point and that point is called vertex. So point A, point B and point C is the vertex. Students, a triangle has 6 parts. A triangle has 6 parts, 3 sides and 3 angles. So we write कि a triangle has 6 parts. एक ट्रायंगल्स के पास 6 पार्ट्स होते हैं और 6 पार्ट्स में 3 साइड्स और 3 एंगल्स आते हैं. वर्टेक्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल. वर्टेक्स जो होते हैं वो ट्रायंगल्स के पार्ट्स नहीं होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज. सो ट्रायंगल can be classified in 2 ways. First is by side and second is by angles. अब ट्रायंगल्स को क्लासिफाई किया जाता है 2 वेज, 2 तरीके से. एक बाई साइड और दूसरा बाई एंगल्स. ओके, तो by side there are 3 types of triangles. By side there are 3 types of triangles. First is equilateral triangle, second is isosceles triangle और third is a scalene triangle. Type of triangles by side. First is equilateral triangle. Equilateral triangle. All sides are equal in a triangle. ABC is a triangle and AB is 5 cm, AC is 5 cm and BC is 5 cm. All sides are equal in a triangle and that triangle is called an equilateral triangle. Okay. Second,
isosceles triangle. Isosceles triangles. A triangle in which any two sides are equal. Any two sides are equal. So PQ and PR are equal. Two sides, any two sides are equal in a triangle is called an isosceles triangle. And third is a scalene triangle. A scalene triangle. So a triangle in which no any two sides are equal. No any two sides are equal in a triangle is called a scalene triangle. कोई भी दो साइड आपस यानी नो एनी साइड्स आर इक्वल, नो एनी टू साइड्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एन स्केलेन ट्रायंगल. Triangles by angles. First, acute angle triangle. First, acute angle triangle. A triangle in which all angles are acute angle. A triangle in which all angles are acute angle. What is acute angle? More than 0 degree and less than 90 degree. An angle which measures more than 0 degree and less than 90 degree is called an acute angle. So, in a triangle, all three angles are acute angle and that triangle is called acute angled triangle. Okay. Second, right angle triangle. Right angled triangle. What is right angle triangle? A triangle in which one angle is 90 degree. एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम एक एंगल 90 डिग्री. तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल. ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री. एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल. थर्ड नंबर, ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. A triangle in which one angle is obtuse angle. What is obtuse angle? More than 90 degree and less than 180 degree. So, students, in this triangle, angle B is 120 degree. That angle is called obtuse angle. So, a triangle in which one angle is obtuse, that triangle is called the obtuse angle triangle. Okay? And some properties of the triangle. First is the sum of the angles of a triangle. All sum of the angles of a triangle is 180 degree. Second, the sum of two sides of a triangle is greater than the third side, and the difference between any two sides of a triangle is less than the third side. Okay. Students, our next topic is some terms related to a triangle. So, student, first is the median of a triangle. What is the median of a triangle? Median of a triangle is a line segment. A median. What is the median of a triangle? एक triangle का median क्या होता है? तो a median of a triangle is a line segment. A median of a triangle जो है वो एक प्रकार का लाइन सेगमेंट होता है. तो ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स या ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड. टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, thus bisecting the side. Thus bisecting the side.
In this figure, in triangle ABC, in this figure, AD is the median. AD, BE and CF. AD is the median. AD is the median. BE is the median and CF is the median. For students, AD is the median, so AD is the line segment which is joining the vertex A to the midpoint of the opposite sides of vertex A, that is the BC, midpoint of the opposite side. That point D is midpoint, and this point bisect this side BD equal to DC. बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल साइड में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना. तो AD is the median because AD is the line segment which is joining the vertex of a triangle and to the midpoint of the opposite sides of a triangle. Midpoint of the opposite side, it means bisecting the side. Bisecting the side. A triangle has three medians. A triangle has three medians. In this triangle, AD, BE and CF. Okay? AD, BE and CF are the three medians of this triangle. So, students, a triangle has three medians, and all medians meet at a single point. All medians meet at a single point, and that point is called the centroid. That point is called a centroid. So students, point G एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे आकर के AD, BE and CF meet at a single point G, and this point G is called the centroid of the triangle. A point G जो है वो कहलाएगा क्या? Centroid of the triangle. Okay? And students, a median divides the triangle divides into two smaller triangles. A median divides two smaller triangles in equal area. Okay? So students, we say that a median divides the triangles into two equal parts, यानी two equal a small triangle, two equal a small triangle and equal area, and all three medians divides a triangle into six smaller triangles in equal area. यानी कि तीन मीडियंस मिलकर के पूरे ट्रायंगल को 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, and all triangles are equal in area. All triangles are equal in area. Okay? So students, our next term is altitudes of a triangle. Altitudes of a triangle. So an altitudes of a triangle is a line segment. And altitudes of a triangle is a line segment that starts from the vertex, and meets the opposite side at right angle. Opposite side at the right angle. Starts from the vertex and meets the opposite side at right angle. Okay? Altitudes. What is the altitudes of a triangle? Altitudes of a triangle is a line segment which starts from the vertex of a triangle and that meets opposite sides at right angles. Okay? In this figure, ABC is a triangle. AL is the altitudes of a triangle, of this triangle. So AL is starts from the vertex A. AL is the starts from the vertex A and meets the its opposite side BC at right angles. At right angles. Okay. So AL
we say that कि AL is the altitudes of a triangle. Students, a triangle has three altitudes. In this figure, AL, BM and CN are the three altitudes of this triangle. So we say that कि a triangle has three altitudes. All altitudes are concurrent. C-O-N-C-U-R-R-E-N-T. Concurrent means कि two or more than three line segments meet at the same point. So students, AL is the line segment, BM is the line segment and CN is the line segment, all passing through the same single point H. So we say that all altitudes of a triangle are concurrent. And in the terms of median, in the case of median, all three medians of a triangle are also concurrent. Okay. Some properties of the altitudes of a triangle. So every triangle has three altitudes. प्रत्येक triangle का तीन altitude होता है. One from each vertex. प्रत्येक जो होता है from the vertex से start होता है. A से start हुआ, B से start हुआ और C से start हुआ. Okay? चलिए. Second, कि the altitudes is the vertex distance from the vertex of its opposite side. मतलब कि altitudes is the vertex distance. Altitudes जो है is the vertex distance from the vertex to its opposite side. यानी किसी भी triangles के vertex और उसके opposite sides के बीच का सबसे vertex distance कहलाता है altitudes. Okay, and the three altitudes always meets at a single point. The three altitudes always meets at a single point, and that single point is called the orthocenter. That single point is called the orthocenter. For students, in this figure, AL, BM and CN are the three altitudes meet at the single point H. So we say that in this figure, point H is called the orthocenter of the triangle ABC. Okay, and the altitude of a triangle may lie inside or the outside of the triangle. Altitudes जो triangle का होगा जरूरी नहीं कि inside of the triangle हो, outside में भी हो सकता है. जैसे हम लोग obtuse angle triangles में जब हम लोग draw करते हैं altitudes को, तो हम लोग क्या करते हैं, side को produce करके outside of the triangle में altitudes draw करते हैं. So we say that कि the altitudes of a triangle may lie inside or outside of the triangle. Okay. Students, next term is incenter of the triangle. What is the incenter of the triangle? So incenter of a triangle, the point of intersection. What is the incenter of a triangle? The point of intersection of the internal bisector of the angles of a triangle. The point of intersection of the internal bisector of the angles of a triangle is called the incenter of the triangle. The point of intersection एक ऐसा point जहां पर दो या दो से अधिक लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है. The point of intersection of the internal bisector of the angles of a triangle. एक ट्रायंगल के एंगल्स का इंटरनल बाइसेक्टर, यानी क्या कि इन ए ट्रायंगल ABC में हमारे पास तीन एंगल्स, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. ओके, और ये तीनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर. सो अगर AD है तो AD इज द लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट द एंगल A. एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना जस्ट, एंड BI bisect the angle B and CI is the bisect the angle C. So and all
internal bisector meet at the point I. For that point is called the point of intersection. Okay. For the point of intersection of the internal bisector of the angles, यानी किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो बाइसेक्टर होगा, एंगल का बाइसेक्टर, जो एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल meet at the point, meet at a single point, meet at a single point, and that single point is called the incenter of the triangle. It's called the incenter of the triangle. Okay, so point I is called the incenter of the triangle. Okay, clear? And ID is the perpendicular to BC, perpendicular to BC. So I is also perpendicular, IF is also perpendicular. So this is the incenter of the triangle. Okay, incenter. Students, a circle with center I and ID is the radius. I is the center of this circle and ID is the radius of this circle. So this circle is called the incircle of the triangle. Incircle of the triangle. Okay. In this circle, I is the center and ID is the radius of this circle. Okay, so this circle is called the incircle because क्योंकि ये अंदर में सर्किल बन रहा है हमारे ट्रायंगल का, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, incircle of the triangle. Okay, अब students, our next term is circumcenter of a triangle. What is the circumcenter of a triangle? So the point of intersection of the perpendicular bisector of the side of a triangle. The point of intersection of the perpendicular bisector of the sides of a triangle, of the sides of a triangle is called its circumcenter. It's called its circumcenter. Students, in this figure ABC is a triangle. Okay, and ABC is a triangle में AB, BC और AC तीनों क्या है, साइड है. और हम साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कब करते हैं, जैसे जब हम किसी साइड को ड्रॉ करते हैं, किसी लाइन सेगमेंट को, इसको हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बाय यूजिंग कंपास हम इस पॉइंट को सेंटर मानकर और मोर देन हाफ जब हम रेडियस लेते हैं और इस साइड में ऐसे कट किए और इस साइड में ऐसे कट किए, ये मोर देन हाफ, एक आर्क इधर ड्रॉ किए, एक आर्क इधर, और इस पॉइंट को सेंटर मानकर मोर देन हाफ इस आर्क इधर और एक आर्क इधर, और इस दोनों पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं तब जिस पॉइंट पे कट करता है ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है. हम लोग ऐसा कंस्ट्रक्शन में बनाए हैं, बहुत परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया, ये साइड को क्या किया, परपेंडिकुलर बाइस. तो ठीक उसी प्रकार से ये जो है हमारा ये O AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ये लाइन जो है BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, और ये वाला लाइन जो है AC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक इसी प्रकार जैसे हम लोग यहाँ दिखाए हैं. ठीक है, और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट एट ए सिंगल पॉइंट O, एक सिंगल पॉइंट O पर. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, circumcenter of the triangle. So students, we say that the point of intersection of the perpendicular bisector of the side, incenter में क्या था, bisector of angle of a triangle, और यहाँ क्या है, side को bisect कर रहा है. तो the point of intersection of the perpendicular bisector of the side of a triangle is called its circumcenter. So O point जो है वो कहलाएगा क्या, circumcenter. ओके, फिर कहता है कि बिग सेंटर O को सेंटर मानकर, और अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो दैट इज OA. तो OA क्या होगा, OA, OB एंड OC इज द रेडियस. O को सेंटर मानकर
OA, OB और OC को रेडियस मानकर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और ये सर्किल जो है पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, और ये सर्किल जो है इस ट्रायंगल के वर्टेक्स पे होकर पास करेगा और इस सर्किल को हम लोग कहेंगे क्या, सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल ABC। ओके।